और भाई वो स्टेटमेंट क्यों है तुम्हें पता चला? क्योंकि उसका जो ट्रूथ वैल्यू है बड़ा, उसका जो वो ट्रू है। अच्छा भाई ये बोल रहा है एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। भाई क्या ये पॉसिबल है? क्या एवरी रेक्टेंगल बड़ा स्क्वायर होता है? स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। बड़ा भाई ये तो बिल्कुल गलत जवाब है, इट इज अ फॉल्स। अच्छा यश भाई इफ इट इज अ फॉल्स तो क्या मैं उसे स्टेटमेंट मानूं कि ना मानूं अपना? यस 100% बेटा, इट इज अ स्टेटमेंट, बराबर है। और यहां पे उसका जो आंसर है वो फॉल्स है। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द वेस्ट। भाई ये तो सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। द सन राइजेस इन द वेस्ट, इट इज अ ट्रू और इट इज अ फॉल्स? ये फॉल्स है बेटा, फॉल्स है बेटा। द सन राइज इन द ईस्ट बेटा, तुम्हारे बेसिक्स बेटा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बेटा उसे क्लियर कर दो। अच्छा अगर बेटा ये फॉल्स है तो जरा मुझे ये बताओ कि इट इज अ स्टेटमेंट कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट? अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, इट इज अ स्टेटमेंट। अच्छा मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, आमची मुंबई। अच्छा स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट है तो भाई ये ट्रू है या फॉल्स है? अरे वाह क्या बात है यार, तुम लोग ने तो सब लोग ने चैट बॉक्स भर दिया बेटा, परफेक्ट। बराबर है, यहां तक सब लोग को समझ में आया बेटा तुम लोग को? अच्छा तो एक बार बड़ा ये कंसेप्ट अगर तुम्हें समझ में आया तो मुझे फटाफट थम्स अप दिखा दो एवरीवन। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट अगर समझ में आया है तो चलो फटाफट फटाफट बेटा मुझे थम्स अप दिखा दो। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, सब लोग को समझ में आ गया है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग बड़ा डिस्कस करेंगे उसके नोटेशंस, नोटेशंस है ना। स्टेटमेंट ऑफ द लॉजिक क्या है वो तो सब लोग को समझ में आ गया है। एक बार स्टेटमेंट क्या है वो अगर समझ में आ गया तो इसके बाद ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके नोटेशंस कि द स्टेटमेंट ऑफ द लॉजिक, स्टेटमेंट ऑफ द लॉजिक, it has been denoted, it has been denoted by using the small letters. They have been denoted by using the small letters, and that small letters are P, Q, R, S. These are the notations, notations that we use for representing the statements of the logic. These are the these are the notations that we use for representing the statements of the logic.
any statement of the logic, all the statements of the logic, they are being denoted by using the small letters. अच्छा, और कोई भी small letters बड़ा यूज नहीं करना है. कौन से letters यूज करोगे मुझे बताओ, फटाफट फटाफट मुझे बताओ. which are the letters that you will be using. मैंने क्या क्या तुम लोग को ऑप्शंस दिए. either it can be a small p, or it can be a small q, or even it can be the r, or even it can be beta s, but compulsory it has to be the small letters. It has to be the small letters. बराबर है. अच्छा, अब ये स्टेटमेंट हो जाने के बाद अब ये देखो यहाँ पे, you will have to follow the note. You will have to follow the note. You will have to write down the note. बराबर है. note. No, we don't use T. T हम लोग यूज नहीं करते. मनोज और हर्ष, we don't use बेटा the letter T. मैंने जो letters बेटा बताया वही, only P, Q, R, S बस. You will be using बेटा only the letters like P, Q, R, S. तुम लोग T, F ऐसे कोई दूसरे कोई लेटर्स बड़ा यूज नहीं करोगे. नेक्स्ट, in the margin you can write down the note. In the margin you can write down the note. ये फेयरबुक में लिखना है बड़ा, फेयरबुक में लिखना है. write down the sentences which are interrogative, comma imperative, comma imperative, comma which are exclamatory, which are suggestive, and the sentence is open sentences. The sentences which are interrogative, imperative, exclamatory, suggestive, and open are not considered to be as the statement of logic. Are not considered to be as, the statement of logic, are not considered to be as
स्टेटमेंट ऑफ लॉजिक। समझ में आया तुम लोग को? अच्छा, ये जो नाम मैंने तुम लोग के साथ बेटा डिस्कस किए, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, सजेस्टिव, ओपन, जिसमें से बेटा कितने सेंटेंसेस के साथ बेटा तुम लोग सब लोग फेमिलियर थे? एज पर माई नॉलेज बेटा एवरीवन वाज फेमिलियर बेटा विद इंटरोगेटिव, बराबर है? ग्रामर में तुम लोग ने पढ़ा था इंटरोगेटिव। अच्छा, यू माइट बी फेमिलियर बेटा विद द टर्म इंपेरेटिव, you might have heard about the term exclamatory, suggestive, बराबर है? अच्छा, खाली जब ये वर्ड आया बेटा ओपन, तब तुम लोग वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि नहीं? तो सर ये ओपन सेंटेंस मींस क्या होता है? ओपन सेंटेंस, बराबर? वो भी मैं तुम लोग को बताऊंगा बेटा। ये देखो फटाफट यहाँ पे ध्यान दो। When I am talking about the term इंटरोगेटिव अगर बोला तो इसका मतलब ये होता है कि द सेंटेंसेस which ends with a question mark, they are being called to be as interrogative, बराबर? imperative का मतलब होता है कि the sentences which shows order। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी और रिक्वेस्ट, तो इट इज कॉल्ड टू बी एज imperative, बराबर? अच्छा, exclamatory means the sentences which ends with the sign of exclamation, that is called to be as exclamatory. अच्छा, suggestive means the sentences which shows the suggestions, they are called to be as suggestive. And open का मतलब क्या होता है बेटा? Open, what is the meaning of the term बेटा open? Open means the sentences which are incomplete. Sentences which are incomplete. Such type of sentences, they are called to be as the open sentences. But whenever we come across with such type of sentences, we don't consider, I repeat, we don't consider such type of sentences to be as the statement of logic. Such type of sentences, they are not considered to be as the statements of logic. ठीक है? तब मैं यहाँ पे मैं एक करके तुम्हारे साथ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। तुम लोग भाई मुझे ये बताना कि इट इज अ स्टेटमेंट, कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। भाई इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो फटाफट। माय फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ आर यू? हाउ आर यू? चलो भाई मुझे ये बताओ, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है तो टाइप करो एस,
नॉट अ स्टेटमेंट है तो बेटा टाइप करो NS। शॉर्ट में बेटा टाइप करो NS। अच्छा भाई, इफ इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, भाई क्यों 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 इट इज, व्हाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट? तुम्हें कैसे पता चला कि भाई ये स्टेटमेंट नहीं है? Because we know that the given sentence is interrogative. Given sentence is interrogative. क्या बात है भाई, very good. अच्छा, my next example is please come here. Please come here. बताओ भाई, it is a statement के not a statement? टाइप करो बड़ा फटाफट फटाफट। अरे वाह, क्या बात है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों भाई क्यों, रीजन क्या है तुम्हारे पास? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट इज? Yes, because it is a request, it is imperative, and because of that reason, bro, it is not considered to be as a statement of logic. Hooray! India won the match. भाई फटाफट बता, it is a statement, it is not a statement. Hooray! India won the match. Not a statement. Q, because here in this example, it is a exclamatory sign, and since it is exclamatory, not considered of logic. चल भाई नेक्स्ट, beware of the dog. बहुत बार तुम लोग ने बेटा वहां पे देखा होगा कि बंगलों में या कोई बिल्डिंग में बेटा वहां पे बाहर ये बोर्ड वहां पे लिखा होता है beware of the dog. अब क्या लगता है तुम्हें, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट? Not a statement. By beware of the dog, either you consider this as a suggestion or you consider this as a order. जो भाई समझना है वो समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। It is not considered the statement of logic. चल भाई एक बार फटाफट और एग्जांपल्स बड़ा डिस्कस कर ले फटाफट, है ना? अब फटाफट सिर्फ यही लिखना कि इट इज अ स्टेटमेंट, कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। चल अब मुझे ये बताओ, डू यू नो कोंकणी? डू यू नो कोंकणी? भाई मुझे बताओ ये स्टेटमेंट है या नहीं है? डू यू नो कोंकणी? नॉट अ स्टेटमेंट। बात है भाई, क्या बात है। चलो, और रीजन भी सबको पता है बेटा कि इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट? अच्छा, माय नेक्स्ट एग्जांपल इज क्लोज द विंडो। भाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। अच्छा, in a quadrilateral, in a quadrilateral, the sum of the measures of all the angles is 360 degree. In a quadrilateral, the sum of the measures of all the angles is 360 degree.
वाई इट इज अ स्टेटमेंट, वेरी गुड, क्या बात है करण, मृगाशी, परफेक्ट बटन। अच्छा, क्यों है स्टेटमेंट पता चला, क्यों है स्टेटमेंट पता चला, बिकॉज हमें पता है कि ये जो गिवन सेंटेंस है बटन, इट इज अ ट्रू। चलो नेक्स्ट, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भाई इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बराबर है। अच्छा, अब जो एग्जाम्पल लेने वाला बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सब लोग बराबर ध्यान दो। ही इज रनिंग, एग्जाम्पल देखा बेटा तो क्या है, ही इज रनिंग। अच्छा, नाउ व्हेन यू सी दैट द गिवन सेंटेंस इज ही इज रनिंग, भाई मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं तुम्हें पता चल रहा है? क्या तुम लोग बेटा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वेदर इट इज अ ट्रू और इट इज अ फॉल्स? नो। अच्छा, क्यों नहीं कर पा रहे हो, पता चल रहा है तुम लोग को क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो बेटा ये सेंटेंस में ये नहीं पता कि भाई हु इज रनिंग, व्हाई ही इज रनिंग, भाई आफ्टर हुम ही इज रनिंग, भाई कौन भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है। जब तक तुम लोग को ये नहीं पता चलेगा, क्या तुम लोग ये डिक्लेयर कर पाओगे कि वेदर द गिवन सेंटेंस इज अ ट्रू और फॉल्स? नो। क्यों? क्योंकि ये जो गिवन सेंटेंस है मैडम, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट अगर बोला बेटा, इनकम्प्लीट अगर बोला तो इसका मतलब इट इज अ बिग टाइप ऑफ सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, बराबर है मैडम। और ओपन सेंटेंस अगर बोला, ओपन सेंटेंस अगर बोला, इसका मतलब भाई इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये जो एग्जाम्पल बेटा मैंने यहां पे डिस्कस किया, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। समझ में आया तुम लोग को? चलो, आज जो मैंने तुम लोग को बड़ा लेक्चर में सब समझाया है, वो अगर तुम लोग को समझ में आ गया हो बड़ा, तो सब लोग बड़ा चैट बॉक्स में आग लगा दो, सब आग लगा दो, सब लोग बड़ा चैट बॉक्स में फटाफट। अगर आज जो मैंने तुम लोग को सब समझाया है, जो तुम लोग को एक्सप्लेन किया है, वो अगर तुम लोग को समझ में आया है, तो सब लोग बड़ा चैट बॉक्स में आग लगा दो, सब बड़ा फटाफट। अगर नहीं कर सकते तो मुझे फटाफट 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 थम्स अप दिखा दो फटाफट।
अरे वाह, हर्ष ने तो भाई, दुर्गा ने, ओम ने, सब लोग ने बड़ा आग लगा दी है। वाह क्या बात है भाई। प्रेम, सेल्वेन, क्या बात है भाई, मजा आ गया है, मजा आ गया है यार। यू पीपल आर द लीजेंड्स। बारिश में भी तुम लोग ने बड़ा आग लगा दी है। सलोनी, क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया है तो यार। नंदिनी, क्या बात है भाई। आयुषी, वाह वाह, वेरी गुड यार, मजा आ गई भाई तुम लोग को। यू पीपल, A1 SYJC स्टूडेंट्स, बड़ा दे आर द ट्रू लीजेंड्स। क्या बात है, इतनी जोरों से बारिश हो रही है और बारिश में भी तुम लोग ने आग लगा दी। इसका मतलब तुम लोग को सच में सब कुछ प्रॉपरली समझ में आ गया है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट तुम लोग को बड़ा एक्सप्लेन किया था, ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट बड़ा तुम लोग सब लोग वहां पे है, ऐड कर लो बड़ा। सेकेंड पॉइंट तुम लोग सब लोग बड़ा वहां पे ऐड कर लो फटाफट। कि ऑल द मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, all the mathematical identities, all the mathematical identities all the mathematical identities are considered to be as, are are considered are considered to be as, are considered to be as statement of logic, are considered to be as statement of logic। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा, जो मैंने तुम लोग को पढ़ा है, वो सब तुम लोग को बराबर ध्यान रखना है। ऑल द मैथमेटिकल आइडेंटिटीज। अच्छा, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज अगर बोला तो इसका मतलब मैथमेटिक्स के बड़ा जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स है, दे आर बीइंग कंसीडर्ड टू बी एज द स्टेटमेंट्स ऑफ लॉजिक। अच्छा, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑल दिस मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, either it will be a true or it will be a false, either but it will be a true or it will be a false, but it will be not both, but it will be not both, therefore it is being considered to be as the statement of logic। चलो एक बार फिर से रिपीट करो फटाफट। ऑल द मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, ऑल द मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, भाई हम लोग उसे क्या कंसीडर करें? स्टेटमेंट के नॉट अ स्टेटमेंट। फटाफट 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 चैट बॉक्स भर डालो बेटा फटाफट। ऑल द मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, अरे वाह भाई, क्या बात है। दे आर बीइंग कंसीडर्ड टू बी एज द स्टेटमेंट्स ऑफ लॉजिक। दे आर बीइंग कंसीडर्ड टू बी एज द स्टेटमेंट्स ऑफ लॉजिक। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? Because this mathematical identity, either it will be a true
or it will be a false one. Either it will be a true or it will be a false, but it will be not a both. Therefore, it is considered to be as the statement of logic. चलो वेरी गुड बेटा। तो आज हम लोग बेटा यहीं पे स्टॉप करेंगे, बराबर है। और चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग, ठीक है बेटा। सब लोग रिवाइज करते रहना, सब पढ़ते रहना अच्छे से। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चंस पूछूंगा सबको। बाय ऑल ऑफ यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।